इसको पी के लेट के ऊपर ये खाना है एंजॉय हो गया क्या ये पेन घूम गया स्वीट है इसको पुराने का सिप ले उल्टी करोगे ना मेरी गलती है ये भाई दूर जा बिकॉज़ कॉफी स्मेल करके उल्टी आ गई एक्चुअली ये भाई कॉफी तो अच्छी है एक गाइड ना दे अगर देखो लूज मोशन नहीं होता क्या बात ये दोनों चीज आई विल तुरंत देखो चालू है मीटिंग नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है मेरे पास देखते ये नहीं दो पेन में बट तेरा वो ये का गया कोई ना Osama bin Laden said, "This is how I bomb people." क्या very small अरे देखो क्या हो रहा थोड़े लोग नहीं होता इसमें क्या गलत है दिखा देखा नहीं एओर्टा नहीं डाला एओर्टा नहीं है शायद सस्पेंड है आप बड़ा जिंदर होता है क्या कर रहा तू किधर अरे बाल रन द प्लेटफॉर्म बैकवर्ड्स पता ना तेरे को हाँ तो यहाँ पे होगा अरे तूने बोला अरे ये देख मेरा तूने बॉल बोला वन शौर्य तूने एओर्टा नहीं बनाया इधर से इधर हमसे यहाँ पे एओर्टा तो यहाँ पे ये तो जीवन है मैं चीज और फिर एक ही बात है क्या एक ही बात बताता है क्या फोटोग्राफी नाइट फोटोग्राफी नाइट में इतना गंदा था क्या बोला एक्सट्रीम वॉल्स लाइक मैंने बिल्कुल नहीं बैग ऐसे पेपर कौन ले फिर भी भाई मैं कॉमर्स में तू you're in commerce नहीं एंड्रू ये कॉमर्स में कौन है क्या पागल है क्या मैथ्स पढ़ के मैं कॉमर्स में लो एंड्रू कैच कॉमर्स इन साइंस तू पागल है साइंस इज कॉमर्स from my side you're too big from my side you're too big to play science is commerce pictures है मेरा वो अबे यार What is it the fight goes on? Good evening, everyone. Why can't you stand up? Shall I make you to stand for next 10 minutes? Sure? Is the teacher's duty to make you? Okay, sir. First lecture है. It's okay. All happily smiling, giggling. क्या झगड़ा कर रहा था इस लड़की से? ठीक, शांत शांत इसके लिए इतना टीचर इज कमिंग इन एंड यू टू आर ओपन कैनन्स ठीक है रिलैक्स ओके गाइस वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर सॉरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी माय सेल्फ अलगेश ओके you see ALSH in your timetable fortunately it's me unfortunately yours correct you have to bring geography
keep a separate notebook. Everyone having? If not today, every day you must bring. Every day, matlab, every Tuesday I'll be coming. Oh, that's wonderful smile. Good. ये क्या है? Relax हो जाना. Still, settle down first. To make you to settle down is the real concept. फिर मुझे settle down करने के लिए कौन बाहर से लाऊं? मैं settled है already. How do you know? ठीक है. 9th standard geography and 10th. What's the good thing about? I think some are good, some are very good, some are saying okay. Subject. For you. एक मिनट रुको. क्या settle हो गया? What is a tussle, man? Actually, what happened that Duckon is there and pen is here and both are duckons. क्या है problem? एक word में बता problem. इसका पेन का नीचे था तो मैंने नीचे दिया. Single word में problem को बता. Solve. Yeah. Solve. 8:30 के बाद रख ले. 35 के बाद. ठीक है. I was talking more about the subject. Okay. This year, luckily, I don't know how many chapters your board is going to give grace for you. Last year they had done, but I don't know. Fortunately, अभी तक तो ICSE ने कुछ declare नहीं किया है. So we'll take it 100% and go ahead. But all my wonderful students want the deletions first, है ना? Out of syllabus बोलना बहुत पसंद है आपको. But ठीक है, अभी जो है, we will go ahead. There are simple things that I demand from you. You can demand many things from me related to geography, है ना? One thing that talking in between, laughing, giggling, especially with the girls, and more especially with the boys. No, it's okay. Smiling is done. It's okay. And simple things you have to bring the books. वो तो कोई भी पूछेगा. And little bit regular रहना, है ना? Don't be a guest appearance. You understand what is guest appearance? Yes. And physically everyone looking bright and beautiful, handsome. थोड़ा सा mentally भी रहेगा तो अच्छा रहेगा. Why she smile? Look at the things. देखा ना? I don't want 100% dedication. हाँ, बच्चे लोग बोला 100% dedication चाहिए, पहले सर को उठा के बाहर फेंको. ऐसा नहीं. I won't be bossing you, but at the same time थोड़ा सा जितना आप मुझे cooperate करेगा, I can do you the best. For last good number of years I'm teaching. मेरे बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए. अलगेशी है, ड्यूटी के साथ कुछ सालों से जुड़ा हुआ हूँ, and I'm doing little bit good. If you had any XYZ people from our wonderful ICSE batch, nobody? कौन था? Did you take my subject? You will be getting in-depth analysis. He was there in 9th, na? Where is the other? No idea. ये तभी भी ऐसी था, अभी भी ऐसी. हाँ. वो ऐश्वर्या राय है कि बार-बार उसको पीछे नहीं. Who do you like? The girls, ladies. किसी को नहीं. फिर उसको क्यों इतना पसंद कर रहे हो? Don't look far. वो अपना handsomeness को beauty में convert कर लेंगे. ठीक. There are different volumes, not volumes, the modules. If I tell you, out of 80, 30 marks is flat for your maps. So आप लोग बोल सकते हैं कि अगर आप उसमें अच्छे से थोड़ा सा practice कर लिया, अपना pocket में 30 marks अभी से carry कर सकते हैं. But वो topo sheet करके है, many people cry, don't cry, but I think it's simple. I'm not going to start initially. I'll be starting the second module. So आज मैं climate करके एक chapter है वो करूँगा. Any of the schools, did they start with topo? No, high school actually did with soil. Soils. one chapter topo and class. ये क्या आधा अधूरा? What is it? Climate is it? No, second one, soil. अच्छा, soil erosion there is. Climate, half and topography. Yeah, कौन है? Half. Two teachers are there. No. Only one. They take one day topo, one day. तो ठीक है, मैं one day नहीं खेलूँगा. I will play T20 only. हाँ. Topo चालू किया और She's a very practical. Topo चालू किया, आगे बोल क्या चाहिए? Climate का introduction. Climate का introduction.
So shall we begin with our wonderful chapter called climate? Yes. Okay, take out your notebook, put today's date, write the heading. हाँ मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन ओरिएंटेड भी हूँ मैं मतलब आप लोग से हाँ वेरी स्मॉल रूम विद सो मच ऑफ एसीज एंड है ना सर हाँ जी सर मैं स्कूल में एक वर्कशीट दिया ना English या सो in your school या इन माय स्कूल what is happening या Berlin happening but I understood thank yeah you so what happened that from there itself we got a school has moved to a different place no from there we got a Ramayana worksheet and Sita were inside जल्दी बोलना yeah so we got a worksheet so I'm not अच्छा able geography to worksheet yeah so I'm not able to please bring it to me I I won't got solve it it today but I'll help you मतलब मेरे पास जैसे तू सॉल्व करके ला है ना और ब्रेक में समोसा पाव खिलाए नहीं I'll help you don't worry when you need to submit that tomorrow itself क्यों रे 2 दिन के बाद करना क्या फर्क पड़ता है ठीक है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा yes हमारे स्कूल में चैप्टर स्किप किया climate they thought solid resources is easier to it like वो grouping होता है ना एक मिनट रुकिए how many are from this school no this I'm the only one I go to school in Nairobi वे Euro school अब रहता किधर भाई तुम्हें इधर वाशी यार आपका पेरेंट्स तो आपके ऊपर दया नहीं होता थाना और डोंबिवली वहां डाला हाउ डू यू ट्रैवल स्कूल बसेस से बट अच्छा है then there are now I've took lectures in Dombivli I don't remember Badlapur also I've taken lectures and some students in Thane they come all the way from Badlapur and timing so no morning 7 o'clock का lecture the girls tell me they take the local at 4:45 मैंने बोला 4:45 को लोकल लेते सर आपका लेक्चर के लिए आ रहा है वरना तो नहीं आएंगे I teach entire economics to college level students अभी थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ आपने ज्योग्राफी नहीं को नहीं ये मेरा पहला लेक्चर में बच्ची पूछ रही है तो मैं अभी क्या जवाब दूं ना आई टीच बोथ इज इट देखो ठीक है मैं थोड़ा सा अपने बारे में बढ़ाई मार लूं विद योर परमिशन initially I started teaching after my 12th standard my favorite subject is English I still teach up till IB level भी करता हूं I find it that's my bread and butter क्योंकि मेरा पापा का एक शादी लंदन में नहीं हुआ but I feel that I'm a half understood थोड़ा सा फाड़ू करने का but initial 4 years of teaching many of my students used to ask me हिंदी नहीं आता मतलब आता है but क्लास के बाद so some people force me नहीं सर आप हिंदी में भी बात करो थोड़ा सा वरना I never uttered a single word and I love speaking the Shakespeare's language you are अभी सडनली किसी ने बोला सर जूलियट सीजर वाह माय लवली सर जूलियट सीजर आपको आता है अभी है ना हाँ आई हर्ड सम पीपल टोल्ड मी ठीक है she only सीजर and then I slowly when I finished my 12th standard I entered my love shifted to economics then I started teaching college level masters level and management level I worked in some colleges I don't want to name the colleges even now they call me Alagesh Aja मैं बोलता कि कितना students है 300 student टाइम थे at one go I teach 300 students in OD and they give me good fees for that और मुझे भी अच्छा लगता है कि 300 स्टूडेंट मेरा बकबक सुन रहा है वो भी 3 घंटे के लिए बट आई मेक देम वेरी हैप्पी ऐसा नहीं कि 3 घंटे के लिए मेरा बॉसिंग चल रहा है एंड लाइक माय गुड स्टूडेंट योर नेम हाँ आई ऑलवेज फील इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इज माय रोजी माय गर्लफ्रेंड नो रोजी एंड रोटी ब्रेड एंड बटर करेक्ट रोजी ऐसा अभी तक कोई आई नहीं है अगर इटाली से कोई आ गई तो then good number of years I worked in commerce department then unfortunately I joined UT मेरे लिए नहीं उनके लिए then they put me in 12th CBSE economics a good number of years I was working black and blue and making the students red and white correction but then अनुभव सर ने बोला कि आप 10th में भी थोड़ा सा अपना मुंह दिखाई करना और ठीक है अभी मुंह पसंद है तो दिखाई दिया
Then some students बोल कि आप अच्छा पढ़ाता है SST, तो उनका कृपा दृष्टि अभी तक चल रहा है. And I seek your blessings. I'll try my level best to be a simple teacher. बस और कुछ पूछना? Good thing that all my students like my method of teaching. तो हमारे कुछ कलीग्स इधर भी है, वो तो दूर जाके अंदर जोक मारता रहता है, उसीलिए बच्चे पसंद करते हैं. मतलब मेरे एक भी स्टूडेंट को उठा के मेरा टॉपिक का कोई भी पूछो वो बताएगा पक्का. My method of teaching is humorous. That doesn't mean I give lectures only to us. तू तो नहीं करता ना मेरा, तो देखो smile आ गया. What does it mean? Instead of teaching it in a very boring conventional way, है ना? Instead of making you my victim, I become your victim. Will you? Yes, sir. Then I have to be careful from this. अरे victim करो, but towards the subject. And good thing about me, I'll be talking good number of, sorry to use the word nonsense. I've never used any abusive word in English. Because मैंने आजकल के बच्चे को F word को बहुत यूज करते हुए सुना. वो कॉमन हो गया सर, उसके भी आगे बहुत सारा. Sir, especially Hindi word. हिंदी में भी है. अरे बाप रे, ये नहीं वाला. Hindi is like another level. हमारे बच्चे, और ये मैंने देखा लड़कों से ज्यादा लड़कियां बहुत फैसिनेटेड है. सर हमको ये सब अपना अत्याचार है, हथियार. तो गुड थिंग दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ज्योग्राफी में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएगा. बड़ा मैथ नहीं है, सिंपल मैथ है. So where you will be doing addition, but only you have to understand. And I feel as compared to history, as my good student asked me, I teach even history, but like last year we have made demarcation. Some teacher is going to take history and I am going to take geography. Whatever. And if I want to tell more about climate for last 3-4 days, can I say it is the weather of Mumbai or Navi Mumbai or climate of Navi Mumbai? Weather of Navi Mumbai? No climate? क्यों? Climate जगह से change नहीं हो रहा. जगह से change नहीं हो रहा. जल्दी से change नहीं हो रहा. जल्दी से. Very good. ऐसे weather means smaller geographical area. That's what she wants to say. पक्का ना? Thank you. ऐसे climate larger geographical area. Climate of India बोलूँगा. Weather of Maharashtra. Weather of Navi Mumbai. ऐसे climate of India, monsoonal tropical climate. You accept? पक्का? क्या रीजन है? हाँ, मैंने गलती से उल्टा बोल दिया. Tropical, throughout the year the temperature is 30 plus. एज नहीं, डिग्री. हाँ. Second, monsoonal का मतलब क्या है? Arrival and departure of the monsoon determines the other season. Then I say climate is generally least changes. क्योंकि minimum time period to make a country's climate or an area's climate is 35 years. Observe continuously. तब जाके मैं बोलूँगा. Sorry, हम मुंबई कर कैसा एक 5 मिनट इसको देखा ना, इसका पूरा हिस्ट्री बोलेगा फिर 5 मिनट में अच्छा भी होगा, बहुत अच्छा लड़का है इसकी तरह. ओपिनियन क्विकली चेंज होते जाता. बट ज्योग्राफर्स ऐसा नहीं है. 35 साल इसको मैं देखूंगा, सर इसने क्या पाप किया, सर इसके पीछे पड़ है ना. Then only I can say the climate of India. How about a weather? Morning से लेके evening तक. Correct? Maybe for a week, maybe for a month. Then in between I left out fortnight. What is fortnight? Sir, fortnight कैसा है? नहीं तो क्या? Tell me, give me. 14 days and 15th night. अच्छा, उसीलिए उसको fortnight बोलता है. Maybe for 2 months, not more than that. I cannot give you weather of Navi Mumbai for last 3 years. Sorry, फिर ये weather नहीं होगा, और ही कुछ होगा. Correct. So there are a lot of variations in weather. You understand variations? Yeah. Now what are variations? Changes. Can we have climate? 35 years तो wait किया है, तब जाके मैंने opinion बनाया. Correct. So that is what we are going to study in between weather and climate. So write the first question in a notebook. The heading, put today's date and write, compare the terms, or you write concept.
Compare the concept, CONCEPT, climate and weather. Shall I sit for a few minutes? Yes. With your permission. नहीं, आप लोग. I never sit. That's what my bad thing. Sir, can I stand? Please. On the bench, under the bench, or over the bench. She is a good girl, huh? मानती हूँ, height में छोटी पे इधर नहीं. एक मिनट. वो हाइट में छोटी है तो खड़ी हो जाएगी. फिर हाइट में जो बड़ा है उसको क्या करेंगे? 2 इंच नीचे से काटे. You want to really stand? You're making fun of me. Compare the concept of. We need to write. मैं बैठा हूँ. तू लिख रहा है? चल ठीक है, लिख. The term climate refers to. The term climate refers to. REFERS. Climate refers to REFERS. That is refers. Change in atmospheric condition. Changing नहीं है, change in atmospheric conditions. Observed for a larger geographical area. Changes in atmospheric condition observed for a larger geographical area. Area. Second, weather. I'll go slow. Try to use short forms wherever possible. Or I'll try to reduce initially. This method of level of dictation is okay. Yes. Good. I'll be taking my review after 2 lectures. तब तक आप मुझे judge करना. What did I say? Weather बोल रहे हैं ना? Changes in atmospheric condition. For a smaller geography. Changes. देखो weather के लिए W डालते बस. Refers to change in Conditions for a smaller geographical area. Second point, I'm giving both together. 1 point of weather and climate together. Then you write second point. Second point of climate. Climate and weather. अगर आपको distinguished format में लिख रहा है, compare का form में लिख रहा है. हाँ. Write down second point for climate. Sir, wait a second. तो ऐसा बोल रहा है जैसे कि मेरा माइंड से फिर टेप निकल जाएगा. ये तो सर क्या होगा? ठीक. ये तेरा दोस्त को बोल, बार तुझे झांकता रहता ना. Climate is observed for a minimum time period of 30-35. 30- time period of 30 to 35 years continuously. It is observed for a minimum time period of 30 to 35 years continuously. वो डालना मत बोलना. Continuously. Weather, you write capital W. No need to write that word again. Weather is mainly observed for a day. Observed for a day, a week, fortnight. नहीं ना, week का कैसे fortnight? Common है क्या? and for weather is mainly observed for a day, a week, fortnight, a month or so. Next. or a month. A month or so. मतलब more than a month. More उससे ज़्यादा नहीं होगा. You are so sweet ना. क्या इतना छोटा spelling को बार बार.
GHT. GST नहीं. GHT. GHT. I'm going to have a tough time teaching some. What is all this? किसको fortnight का spelling नहीं मालूम? मुझे आते हैं तभी हाँ रुक जा क्या है बोलना? FORTNIGHT. बस. You said GST. GHT ऐसे बोला. भाई साहब, you are not in ABCD standard. छोड़. अभी 10th में है तू. Right now, next point. Climate of India. Climate of India. Hyphen डालना. Tropical monsoonal climate. Climate of India, tropical monsoonal climate. Careful with the spelling. Month. That's why I don't sit. What is the laughter, dear girls? I have to small break the groups which is to my right hand side. Monsoon type of climate. हाँ ठीक है ना मैंने बोर्ड में लिख दिया ना लिखना क्या एक आओ इधर हाँ you laughing right from हाँ तो ठीक है ना इधर आके हंसो no and no 3 in a bench today it is allowed हाँ तो इधर बैठा देंगे ना हाँ तो इधर बैठो she's a daring girl guys control अरे छोड़ो Shall we? All are perfectly placed. Smile and laughter थोड़ा सा कम कर. Laugh it out, but not during my lecture. Did you everybody write? Yes. Because. Why this is called as tropical monsoon? Because you have to write it. You want to tell me? बोलो. Because tropical cancer divides India into two halves. Okay. But monsoonal क्यों आया? Cancer climate आना Because चाहिए. India receives rain. Very good. नहीं वो don't. वो बाद में कर लेना मेरे बाद. Very correct. Affected by monsoon. और कुछ? No. ये कौन था? जरा खड़ा हो जाओ. She wants to stand anyway. Stand up, dear. You only said that noise, na? Stand up. Give your introduction. Ami. Rituja. Just wait for 2 minutes. Huh? Monsoonal, what did I say? You have to write these 2 words. Arrival and departure. Of what? Monsoon. Determines what? Other season, not the climate. Okay. And you already know why it is tropical, since more or less Jan to December, our climate is like this. Correct? अभी ये लिखो. Because it is the arrival and departure of monsoon. Come on. I didn't ask you to say that. What is that laughter? Don't do it. Because it is the arrival and departure of monsoon. It is the arrival and departure of the monsoon. Determines the setting up of which I'm so sorry. Thanks for the English. Which determines the setting up of other 3 seasons. Setting up. Other 3 seasons. Anybody, your friends who have taken geography absent today? All are present? Sure? we all have to absent. No, in math and science, how many more students are? Same ही है. ये गायब. ये नहीं है ऐसा बोलना. Two will go. वो कर जाओ. उससे सिर्फ साइंस और मैथ्स है. इससे अच्छी है. ये रुको. इससे अच्छी है. पढ़ाई में क्या? मुझे इसकी पढ़ाई नहीं पता. अच्छा उसकी पता है ना? तो कैसी है? अच्छी हो. किसमें? साइंस. तो पढ़ाई का बारे में SST में अच्छी है. So you take the help from her. नहीं. You give the help to her. नहीं. Chalo, let's continue. Did you write arrival and departure of monsoon? Yes. Next point you write down. Indian climate.
with its monsoonal uncertainty and vagaries. So this is for Next point. A general point है. Indian climate with its monsoonal. I'm writing that word. Don't say ha, who, house. so this is for weather, right? Next. Indian what? Question कितना पूछते हैं लिखना. Climate. Indian climate with its monsoonal uncertainty and vagary. ये मैं explain भी करूँगा. Or let us make it plural. Vagaries are एक मिनट R बोलती है. A distinguishing feature of southwest monsoon. Uncertainty and vagaries are distinguishing feature of southwest monsoon. I want someone to explain me this line. I will explain what is uncertainty and vagaries. South. West, W. Very good. Line का याद है. Good. I can proudly say my ninth standard student. Anyone else? What is this line saying? Rituja, na? Come on, stand up and explain to Rituja. पहले पढ़ लो. आराम से कोई तो. Distinguishing feature of Southwest monsoon. Southwest monsoon. लगा ये explain कर. Yes. थोड़ा टाइम दो. चलो. अच्छा बोलना है. फिर ऐसे की तरह. Take sit down. This person, what's her name? Saloni. Come on, Saloni. Would you like to? Feel free to tell me the answers. Not only bad comments or ये नहीं करती है ऐसा लग रहा है. नहीं अभी तो नहीं. तो सब लोग 2 minutes में sit down. एक मिनट रुकना इधर boys को भी थोड़ा सा drill कर. Last person. वो एक body तो बता है. Last person. Please stand up. Tell your name. I can see you full. My name is Shaurya. शौर्य. आपने लाइफ में क्या क्या शौर्य नहीं किया है. और चैटर्जी भी है. ओ ममता बनर्जी. I love. What is that? Whiskey doi. Yeah. Whiskey doi. I'm here. वो नहीं देना. So it is basically just saying that because we cannot like make a proper. Good. At least he's making an attempt to explain. It means that like What the is this southwest. Stand up. एक मिनट अभी रुकना. Your name first, school name, then your. मैं भूल जाएगा. Shaurya Kulkarni. बट वो चैटर्जी और कुलकर्णी. अच्छा आमची मराठी पण बोला पटकन. It means that Although I am looking there and concentration is there. Yes. the southwest monsoon winds hit us in that. Because the more funny and more happy I am, I can change very quickly. He knows it. And I'm getting anger, which I don't want. BP बढ़ रहा मेरा tablets का. The southwest monsoon wind is the one which brings monsoon, but it cannot be determined when it comes. So with the Why not? Because अरे वो climate के ऊपर है. अबे हमें ये क्या टीचर के साथ? अरे वो ऐसे ही. Sit down. Good. Your name. Andrew. Andrew Lipos Gomasta. अच्छा ठीक. Andrew Diaz. Cameron Diaz. अच्छा तो वही है उसका भी सरनेम. उसने ही Z बना दिया. अच्छा ठीक है. So the monsoon other parts. You can look down. वो बेचारा शर्मा रहा. The girls are tukur seeing you. Come on. So the monsoon in other parts. मतलब आज तक बोल देगा. ठीक है. I'll tell you. Different from the monsoon हो in चुका. the southwest part of India. ठीक है. Southwest part of India. No, not like that. ठीक है. Good. I appreciate it. Continue what I was saying. What you were saying. So because we cannot properly predict. Very good. Sit down. I think all my students answered wonderfully, including her also and Diaz also. First name क्या है? Andrew.
So when we use the word uncertainty, it's like you, it's like me, है ना? Two aspect में uncertain है. One is in terms of time and other is in terms of quantity. Quantity. Normally I say the month of June to September. This is our regular monsoon. But do you think any time June 1st start, September 30 stop? ऐसा कभी हुआ ही नहीं. It comes in the month of June last week and goes in the month of September first week. Next year, June second week and July last week खत्म. So ये क्या है? क्या है? Uncertain है. समझा? ऐसे quantity. Normally हम लोग farmers को बोलते हैं our monsoon is of 4 months. And बेचारा हमारा farmer क्या करता है? In the month of May only plows the land. You know what it is plowing? Puts the seed and looks at the sky. है ना? फिर हमारा clouds ऊपर से आता है. मेरे लिए wait कर रहा है. हाँ भाई तेरे लिए. आज मेरा mood नहीं है. मैं जा रहा हूँ. है ना? महाराष्ट्र में होता है. विदर्भा. I haven't gone to deep parts of Maharashtra, but Vidarbha farmers are dying out of hunger, dying out of starvation. और हमारा अभी one-sided demon है. Sorry, शरद पवार. That time he was the agriculture minister of India. तो किसी ने प्रेस वाले ने पूछा सर आपका एरिया में बहुत सारा फार्मर्स मर रहा है, what is the reason? उसने बोला food poison. The reporters were puzzled. हाँ, अरे खाने के लिए फूड नहीं मिलता और लोग poison. तो उसने बोला सर wait, instead of food they are eating poison. That is why food poison. How shamelessly answered to the press. हाँ मतलब क्या करें ना, they have taken the loans and the banks are terrorizing. अरे वो तो 10 रुपए का पहला राट का किधर भी मिल जाता. अभी क्या करेगा ना, instead the bankers are coming and harassing them. They not only they, पूरा family के साथ वो लोग मर जाते. So recently only during summer, while summer was happening, so in Kolkata itself, some rain was happening. But what is the moral of the story? Yeah, so is that weather? I'm explaining the monsoon. Wait. That you are referring is something global climatic change, sudden changes. Here we are referring regular season. Are you understanding? So ये समझा uncertainty time. Anybody have a query? Query? No query. Next, I say the word quantity. When I say to the farmer, the monsoon is there for 4 months. हमारा monsoon का behavior देखो. June second week में start हुआ, ठीक है? और July third week के पहले gives all the rainfall which is stored for 4 months. Do you think the farmers can withstand? No. पूरा बैल सब कुछ पानी में है. पूरा बेचारा ऐसा बैठा है. क्या होगा? This is our problem, not our problem. Southwest monsoon ऐसे behave करता है. But for a farmer, we say 2 days of rainfall, 2 days of dry. 2 days of rainfall, 2 days of dry. तुरंत बच्चा बोलता है ये यूटी का टाइम टेबल थोड़ी है, 1 महीना पहले ही देगा. Because seasonal changes are always there, but it is not frequent. Some year ऐसा होता है, but generally हमारा Southwest monsoon India को 80% rainfall देता है. How much percent? 80%. So that is what I am saying. It is uncertain. समझ में आया? Absolutely. So wherever you have written the word uncertain, छोटा सा उधर लिख लो time and quantity. What is she dreaming? Sure. क्या है? बोलो ना. मैं सुनेगा ना. He's a dreamer. हाँ? Time and quantity लिखा? If I want to tell the word vagaries, I always believe my students are the best example. Are you? Last year, best marks in math and science. This year, okay, I'm tired of studying. Next year, रुको, इतना जल्दी भी मत लिख के जा. हाँ, बीच में 3 महीने का जो गैप आता है ना, there the student says, ये मेरा लाइफ है. मतलब इसके पहले क्या नेबर का लाइफ जी रहा था? नहीं सर, मम्मी बोलती है ये करो, पापा बोलता है ये करो, और मैं कुछ भी नहीं करता, आराम से. It's like that alarm clock. अभी तो क्लॉक नहीं है, मोबाइल आता है सब जगह. 1 time alarm, 3 time alarm, 3 time alarm, 4 time alarm. पापा के 2 लाख बार उठ, क्या है?
अलार्म तेरे लिए और कान में मेरा बज रहा है। मतलब बच्चे ने अलार्म तो लगाया और जाके पापा का पिलो के नीचे लगाया, पापा उठेगा ना मुझे उठा एंड बेचारा टेंशन में रहता है। कल पापा मैं 4:30 बजे उठने का प्लान की, नहीं बेटा नहीं मैं उठूंगा, नहीं बेटा नहीं मैं उठूंगा। तो मैंने पूछा क्यों सर आप इतना डर रहे हैं, आपका लड़का इतना होना है। अरे अलार्म वो किधर लगाता है, मेरा पिलो के नीचे करता है। एंड जब तक 15 बार अलार्म क्लॉक नहीं बजता वो उठता नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, मेरा नींद खराब और क्या। तो पापा बोलते नहीं बेटा तू 7 बजे ही उठ, नहीं 4:30 to 4:30। I remember my 12th standard, the whole night I will be studying and my mother will be forcibly sitting right in my front, और थोड़ा भी yawn भी नहीं करने का, like I will not allow you to do also during my lectures। तुरंत मेरा मॉम को नींद आ रहा है, नहीं नींद आ रहा तो पहले कॉफी बना के पियो, तुमको देख के मुझे नींद आ रहा। ठीक sorry, now she is a little bit not well. Last I think October November she gone through a big neurosurgery, but then also I didn't cancel all my lectures I took, but by God's grace she is good. So why I'm saying I can't forget those days when my mother used to sit and I'm learning looking at my mother। सोने का नहीं, एग्जाम मेरा हो रहा बेचारी वो जाग रही, तो whole night I'll be studying। But I really owe my thanks to all my family and friends and especially my students keeping my concept always clear। ऑल्दो मेरा डिग्री होके कुछ 9-10 साल के पहले हुआ या 10-11 साल हो गया, ऑल माय फ्रेंड्स दे कम एंड मीट मी। अभी एक फ्रेंड बुलाया है टू सी वुड्स, वी आर इनटू स्मॉल बिजनेस, वो भी मैं पार्ट एंड पार्सल है, तो वो भी मेरे साथ ही था डिग्री कॉलेज में। उसको आज इकोनॉमिक्स का कुछ पूछेगा ना, रुक पढ़ा क्या ये चैप्टर, मैं अभी बताएगा, बिकॉज आई एम टीचिंग डे इन एंड डे आउट। व्हाई यू गाइस आर फैंटास्टिक, आर यू? झूठ बोल रहा हूँ सर? ठीक है। So we always believe vagaries are nothing. Every year it's keep changing the behavior. अभी हमारा स्टूडेंट को ये वर्ड से एलर्जी है? हाँ सर, सुबह से लेके शाम तक सब लोग मेरा बिहेवियर के ऊपर ही कमेंट मारता रहता, अर्थ है कि नहीं? मैं तो बोलता हूँ जैसा भी है बिहेवियर है, आई रियली लव दैट बिहेवियर। सच्ची? अरे आप भी मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा, फुल करके लो। सच्चा? चल इसी से स्टार्ट करते हैं। नहीं मुझे मत स्टार्ट कर। देखो आई ऑलवेज बिलीव नो सिंगल टीचर हैज एक्सेप्टेड दैट ड्यूरिंग हर और हिज स्कूल डेज ही वाज अ परफेक्ट, करेक्ट है? बट तुरंत बच्चा बोलता है तेरे सर पढ़ाई नहीं किया, तू इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलता है। बट मैं बोलता हूँ बिंदास रहो, डोंट अफेक्ट द स्टडीज, डोंट अफेक्ट द नेबर्स, जो मस्ती करने का करो। व्हाई? अभी ये स्कूल डेज तुमको दोबारा नहीं मिलने वाले, करेक्ट है? बट इवन 1 मिनट अगर मुझे लगता है कि ये काम की वजह से मेरा पढ़ाई खराब हो रहा है, आई विल नॉट। सो आई नेवर एंजॉयड माई स्कूल डेज, वो तो बहुत पनिशेबल था। कॉलेज डेज भी ऐसे ही था। डिग्री कॉलेज में जाके मेरा 5 फ्रेंड्स बने, उसमें से 3 पढ़ाकू थे और 2 मेरे साथ ट्रैवल करते थे बस। बट आई वॉज नोन टू माई कॉलेज सिंस लिटिल बिट गुड स्टडीज था, बट सब लोग बोलता था यू विल रिपेंट योर लाइफ। स्कूल डेज में भी मस्ती नहीं, डिग्री कॉलेज में भी नहीं। लास्ट आई थिंक माय 17th स्टैंडर्ड आई अटेंडेड व्हाट वाज दिस रोज डे, सॉरी वैलेंटाइंस डे, जो कॉमेडी हो रहा था कॉलेज में। एंड तुझे किसी ने नहीं दिया? बोला नहीं हम कभी आएंगे तो ना। उस दिन कॉलेज का फेस्टिवल ऐसा रहता था जैसे कि मेला लगा है पूरा। एंड जो मैंने पूरा साल भर नहीं देखा, उस दिन अटेंडेंस 100%, सीरियसली। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, so I could see the posh and luxury valleys and bookies, and मैं ऐसे कोने में बुक लेके खड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। तो सम टोल क्या लगी शायद के दिन। हाँ जी, अच्छा। So but some of my friends challenge me कि तू उस दिन आएगा नहीं। मैं बोला आएगा और देखेगा भी तुम्हारा क्या नौटंकी चलता है। ठीक है, ठीक ठाक लगा और अच्छा भी था। यू नो मलार फेस्टिवल इन सेंट जेवियर्स? अच्छा आप लोग अभी उस तरफ गए नहीं, कभी जाएंगे तो देखना। It's considered to be one of the best in India. Malar Festival, Saint Xavier College, VT में है। तो there I got special passes also. और मैंने मेरे फ्रेंड्स को दे दिया। तू नहीं जा रहा है? अरे मुझे उधर क्या करना, तू जा। तो why I'm saying it, when I said about vagaries, I feel आपका जो environment है ना, आपको change करता है। पर अभी का बच्चा नहीं, मैं environment को change करता है? Solid ऐसा नहीं करता। तो हमारा जो मानसून है ना, मानसून का अराइवल एंड डिपार्चर की वजह से हमारा पूरा सीजन्स वेगरीज होता है, चेंजेस आता है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आवर मानसून इज अनसर्टेन एंड लॉट ऑफ वेगरीज। समझ में आया?
Absolutely clear. Let's write the next heading, seasons of India. क्या हो गया बच्चे बहुत सीरियस हो गए? Any tension? हाँ, अभी अच्छा. Seasons of India. Yeah, I will be giving the exact words. Please open up your volume. There are 4 seasons given because मेरा words काफी अच्छा है, but the volume words are not so matching with mine. I think first one they have given hot and dry summer. Am I correct? So you please write the month which is not there. March to May. I'm not writing the heading. Hey, whose handwriting is good out of the girls? It's okay. Please bring the volume. I'm writing only the month. I think this student will help me. Second is southwest monsoon, na? June to September. Come on, write down. Third is October to November. Will you able to fill up? Show me the volume. Last. हाँ ठीक है उसमें भी सेम ही है रहने दो ना. Page 80. ये देखो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक. Hey, Rituja is going to fill up what I have left. Come on, everyone, start writing the same. She will write. लिखो. अच्छा बोर्ड से तो देख के लिखो. हाँ sorry. Hot and dry summer. Hot and dry. hot dry दिया. अच्छा and पहले डाल दो ना क्या फर्क. So पहले लेक्चर में स्टूडेंट को काम देके सर पीछे रख गए. Don't worry, I'll do all my work. दो and एक S है एक and what? How will I differentiate? Nobody will come. Keep on writing. ठीक है you keep writing. इतना टेंशन में आ रही है. पूरा लेक्चर यही चलेगा जल्दी. hot and wet. हाँ ठीक है. Second is southwest monsoon लिखना. Southwest monsoon June to September. Third season. Season of retreating monsoon or only retreating monsoon, whatever you like. Please, not turn off, switch off. Please do it. Cool and dry winter. So there are 2 types of monsoon. No. One is the southwest, other is northeast. I will explain. I'm just saying that southwest and retreating. No. Different. Written? Thank you. Please. Now, if I want to explain all this 4 seasons, first of all, do you think all the 4 seasons appears in India? Yes. नहीं है? तो ये क्या ये बच्ची का कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग है. बोलती है कि अगर मैंने इंडिया लिखा है तो इंडिया का. Is there any season that you find it in America? हाँ कौन सा? हाँ कुछ नहीं. I feel that the whole year is only summer. Exactly. नहीं like India. You feel does not matter. It's geography. Started now. Oh, relax. Interior में पूरा dry होगा लेकिन like in the. ये इंटीरियर मतलब क्या है? Other than this. Name. Delhi, Madhya Pradesh. ठीक. Hey, everyone have copied down? Yes, sir. Now let me ask all the students without seeing with the month. I'll give you. All the 4 season order में आना चाहिए और month के साथ. चलेगा. जो भी मिस्टेक करेगा मार खाएगा, जो मिस्टेक नहीं करेगा चॉकलेट लेके देगा. I'll give it. चलो take your own time. Let's try it out because I have to explain all the 4 season in detail. देखो मैं सिंपल वे में समझाता हूँ. लर्न करना भी बहुत आसान हो जाएगा. ये देखो M और M है मार्च टू में, तो आप लोग समर सीजन भी बोल सकते हैं. सेकेंड साउथ वेस्ट मानसून ये मई में खत्म हो रहा है सितंबर. ये बहुत आसान है, एक ही महीना है. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ये और भी आसान है. नवंबर खत्म हुआ दिसंबर
cool and dry winter. It is December to February. Easy हो गया? चलो. Let's have the first one without a mistake. Take your time. You will make a mistake. Hey, जो अभी तक answer नहीं किया, let us ask one more. Hey, your name? Swara. Swara. Wait. I'll give you time. Swara, ready? Achha, not ready? Wait. I'm doing it right. Wait. The other person. Your name, dear? Avi. Avni is ready? Oh. Rituja? Sure, ready. That's a good boy. Chalo, sure. It's okay. It's name only, na? Hey, no copying. He's looking at me only. It's okay. Oh boy, leave it. We have less time. So hot dry summer. Very good. March to May. Very good. Southwest monsoon. You look into this. June to September. Arey, na. Don't disturb us. June to September. Retreating monsoon October to November. And cool dry winter is December to February. Very good. One shot yes. Come on, girls. Are ready? Stand up. You love stand up. Then sit up. That's it. Confusion है बच्ची. Hot and dry summer, March to May. Southwest monsoon, June to September. Very good. Seasons of retreating monsoon. एक ही season है ना, 15 season. Season of retreating monsoon, October to November, and cold and dry. It is not cold, cool. Cool. It's okay. Cool and dry winter. Very good. Sit down. Let's one from the boys. पूरा बोलना पड़ेगा. One thing. What you are asking me? What happened during April? अरे मार्च टू अप्रैल में है ना. अच्छा. मैं खुद टेंशन में आ गई. अप्रैल अब छुट्टी में बात करते हैं. चलो let us pull it. Come on. Stand up. Hot and dry summer, March to May. Everyone look. Why are you piercing his eyes into the corner? Southwest monsoon, ये देख. कैसी की तरह देख रहे हो? Southwest monsoon, June to September, season of retreating monsoon, October to November, cool and dry winter, December to February. Very good. Let us have one from Shruti na. Hot and dry summer, March to May. Very good. Southwest monsoon, June to September. Retreating monsoon, October to November. And cool and dry winter, December to Wonderful. Let's have after now. Sabrish. Yes, boy. First of all, it's summer season. ना बोलो. Hot and dry season. हाँ, Hot and dry summer is from March to April. Very Then good. it comes. अरे उस बुद्धू का बात कैसे सुन रहा? मार्च टू मे. उसी ने कंफ्यूज किया. अप्रैल किधर गया? आज तक मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस में इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो मैं इस लड़का को तो कभी नहीं पूछता. ठीक है. स्पेशली दियास को तो बुलाने पड़ेगा. You know who is Cameron Diaz? कैसे रे? मुझे भी नहीं पता. नंबर मरेगा तो देना है. ठीक है चलो. Southwest monsoon from June to August. September. उसके बाद आता है उसके बाद आता है तुमने लिखा है retreating monsoon. अच्छा retreating October to November. ठीक है. Last is the cool and dry winter. Wonderful. Very good, Sabrish. Hot and You dry. have to get it. Hot and dry. You have to come here. अच्छा ठीक है बोलो. Hot and dry summer, March to May. मैं इतना टाइम करके हंसने लगा. Relax. नहीं. Look at me. Look at the book. नहीं, उनको कॉपी हो जाएगा. अरे बाप. तो इतना देर कॉपी नहीं कर रहा था. अच्छा बोलो. Summer हो गया. Look at the style of laughing. I'm loving this. एक बार रिकॉर्ड करो. Southwest monsoon. अरे मेरे मुंह में June to September. उसके बाद
Radiating monsoon, October to November, or cool and dry winter, December to Feb. Very good. Anybody? Only one voice left. Come on. And one girl is left. Stand up, stand up. पहले अपना अरे रहने देना. Choose to taste. फिर वो तुझे फिर एक टका देखता है. Hot and dry summer, March to May. Then you have southwest monsoon. Nobody. Look into the. Southwest monsoon. हाँ. June to September. ठीक है. June to right. September. Retreating monsoon. The October to November. Cold and dry winter. Very good. Sit down. No. अरे बोल तो. December to February. You know. Very good. हाँ. Hot and dry summer March to May. फेविकोल लगाए के जरा. लगाए. अब वो खड़ा हो चुका है. Hot and dry summer March to May. Southwest monsoon June to September. Retreating monsoon October to November, and cool and dry monsoon Very good. December. Sit. It's okay. It's okay. It's okay. Everyone pack your bags. Be ready. Only मैं explain करूँगा, then you can run away. और यह explain नहीं करूँ, बात में थोड़ा. Without talking, pack your bag. Andrew के लिए क्या रखा है? कुछ ना उसे क्या रखा है? हाँ? बस कुछ ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है. छोड़ना आजकल सब लीगल है इंडिया में. Why are you worried? अरे मतलब देखने का लीगल है. What is it? What is it? I said legally we have to study geography. What? तू तो बोल दिया ना. तू अप्रैल ढूंढा तभी मैं समझ गया. तुझसे पूछ के मैं सर पढ़ लेगा. Everyone ready? Shall I explain? अभी कोई भी नहीं सुनना. सुनेंगे? या नेक्स्ट लेक्चर में करूँ? अभी सर सर बता दो ना. क्या? 5 मिनट की बात. 4 minutes है. Listen. I'll which one you want? Done. Now, when we have this 4 season, what you have to understand, there is separate cushion coming on this. Separate cushion coming on this. Somebody asked me, I think he asked me, इधर देख. 2x2 bench change कर इधर किधर भी आ. बार-बार पीछे देख रहा. I don't know what is the. This is this. आने रहने दे अभी 5 मिनट की. This is northeast. Now, when I'm going to show you in the map, this is southwest. And this is northeast. अब बोलेगा दोनों peninsula ही बना है ना? But let me show you the direction how they move. So this is Himalayas. Again, this is Himalayas. Okay. Southwest, the inflow is like this. It is from sea to land. Correct? Indian Ocean इधर है. इधर. पक्का? इधर. So it is entering from south and mainly entering into west direction, stopped by Himalayas. Heavy rainfall, the first rainfall is to Kerala and to Andaman and Nicobar. Please remember this and don't forget when I meet you in my next lecture. So this is nothing but the southwest. Did I say it? If you remember, 80% of India's rainfall ये देता है. Whereas northeast, it is 1 month only. Did you see? And normally these are dry winds. Correct? Can anybody tell me why these are dry winds? नहीं वो land से Very good. Land to sea. And somebody told precipitate. Already it has shedded. Sir, that's what I said. Thank you. Good boy. Good boy. Now it is going back. You understand? Mobile. Give it to me. Give it to me. No problem. I'll put it into vibration. पहले भी एक बार observe किया था. What I say, it is from land to sea. It does not give rainfall to the whole country. It gives rainfall only to some parts of Andhra and mainly Tamil Nadu, and that also only to coastal. So never forget these two. So this gives only rainfall 20%. And then we see here, they'll ask you a separate question. What do you mean by October heat?
चल कौन बताएगा? Summer during October. Heat experience in October which was हाँ ठीक है. Anybody girls want to give it a try? Nobody. Sudden rise in the temperature in the month of October. And I think you guys understand what is frustrating. Not frustrating, not studies. It is the heat. अभी अपना rainfall खत्म हुआ है, but suddenly temperature बढ़ता है. Only in the month of October. That is called as October heat. So we have 2 monsoon season. Come on. Southwest. सब लोग बोलेंगे नहीं, बोलो Southwest. ये क्या माइक पकड़ा है? Southwest, how much rainfall? 80. Come here and write down. So yawning करने का बंद. Okay. And Northeast, how much percent rainfall? So will you remember by next lecture? Yes, sir. Thank you. Yawning का कोई issue नहीं है, but so it was wonderful looking and giving a lecture to you. I hope next week also will continue the same. Thank you. God bless you. Okay. Sir, I got a doubt. What is the sheet?